Well, let's. और उठा और पूरा लेट खोला ना ऐसे ऐसे लाइटिंग ज्यादा है इस तरफ अच्छा
और सब लोगों को कनेक्ट हो जा बोलो। Done? हाँ तो बढ़िया खड़ा। చూపిద్దాం తక్కువ వాళ్ళగా ఇక్కడ తక్కువ చూపిద్దా చూపిద్దా ఎందుకు అండ్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత వస్తుంది రెగ్యులర్ 60 మంత్లీ చెప్పు ఎవ్రీ మంత్ రికరింగ్ మంత్లీ రికరింగ్ చేస్తూ పట్టపట్ట వచ్చాయి డాక్టర్ సాలరీ 40,000 డ్రైవర్ సాలరీ 15,000 15,000 85 ప్లస్ వెహికల్ ఈఎంఐ 20 వెహికల్ ఈఎంఐ 20,000 హలో హలో ఎంత వేసినావు హలో హలో తడిసి వస్తుంది.
हेलो। ओ दिनेश जी। हेलो। राजा जी, जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर। सभी सभी भीम। जी सर। कैसे हैं आप? जय भीम सर, जय भीम। जय भीम। Sir, good afternoon, sir. Hello. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Sir, good afternoon. तब जी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good evening. Good evening, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sanjeev sir. Good afternoon everyone. Sanjeev Dangi sir. Good afternoon Rajkumar sir. Good evening. Good evening. फोटो जा रही है ना पूरी प्रॉपर्ली। इवन
Manoj, Manoj जी, मनोज जी, Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं. Good evening. Yes, sir. Can I start with the permission? गौतम जी स्टार्ट कीजिए. To everybody. Everybody, good evening, Padma Shri Nara sir. We welcome you to the 12th edition of the weekly webinar series, which is 12th series of Swavalamban Sankalp mega campaign. As you all know that Swavalamban mega campaign is being done in Dicky and Sidbi to give Philip to Stand Up India scheme. This is a webinar series which showcases new business opportunities for SC/ST enterprises, entrepreneurs through various franchisee business models in a plug and play. Today, in the series, we have our franchisee. We welcome Dr. Muralidhar Dasari ji, who is the managing director of Wet on Wheels. So, but before we start, I would request Padma Shri Nara sir ji to kindly welcome and bless us with his words. Nara sir, please. So thank you, Gautam. I welcome all the participants of today 12th Swavalamban Sankalp program, which is successfully running for the past 11 episodes have done wonderful performance, and now today is the 12th one. So today's franchisee owner is Dr. Muralidhar. ये मुरलीधर साहब का जो वेंचर है, अभी सब अपन को आज एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप जानने वाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स वेटरनरी करके वेटरनरी डॉक्टर पढ़ के भी वो उस पर स्टिक नहीं होते हैं, फिर बाद में वो थोड़ा रूट बदल देते. लेकिन डॉक्टर मुरलीधर ने ये वेटरनरी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके और ये बिजनेस में बहुत ही बड़ा नाम और अच्छा एस्टैब्लिशमेंट सेट किया और अच्छा बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. मैंने इनका हॉस्पिटल हैदराबाद में जा चुका हूं और वहां जाने के बाद में मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अरे अगर आदमी सोचे तो कौन सा भी इसमें अगर कमिटमेंट से काम करे वो कामयाब हो सकता है. वो सक्सेस स्टोरी डॉक्टर मुरली जी का है और उनका हॉस्पिटल में ही टेक्स केयर ऑफ ओनली डॉग्स के लिए. वो डॉग्स हॉस्पिटल का मतलब ये है कि वो उनका हॉस्पिटल में डॉग्स के लिए ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू यूनिट है, लेबर रूम है और डायलिसिस यूनिट है, लैब है, एक्सरे और बहुत सारे जो आदमी का हॉस्पिटल जैसे रहता इससे बढ़िया ये डॉग्स का हॉस्पिटल उन्होंने रन कर रहा है. और इसमें जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो जब हम हमारे से मिलने के बाद में जो मुझे एक्सप्लेन किया कितना पोटेंशियल एरिया है और ये अनटैप्ड एरिया है और कोई लोग इसको टैप नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने डॉग्स के बारे में डॉग्स का जो फूड मैन्युफैक्चरिंग से लेकर
डॉग का टॉयज, डॉग का बेल्ट, डॉग का क्लोथ, स्वेटर और डॉग का स्पा भी खोला है। वो इनॉग्रेशन पे भी मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। फिर उसके बाद में डॉक्टर ऑन व्हील्स, ऐसा बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज इन डॉग्स इसमें वो कर। आज का इसका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर मुरली जी को, तो इतने कमिटमेंट से ये काम कर रहे हैं। सो देश में पहला डॉग्स हॉस्पिटल होगा मेरा कहने से, और बड़े बड़े फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज भी उसके ऊपर भी उन्हें काम किया है और देश भर में एक्सपैंड होना चाह रहे हैं और पूरे लोगों को उसका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देने के लिए वो तैयार है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आज के पार्टिसिपेंट्स सीरियसली उनको सुनिए और उसके बाद में उनका कांटेक्ट डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे और बहुत ही अच्छा बिजनेस, एक नया अनएक्सप्लोर्ड एरिया में अपन इंटर हो सकते हैं। आज के तारीख में हैदराबाद में तो आई कैन से द मोस्ट पावरफुल मैन इज डॉक्टर मुरलीधर। मैं इसलिए पावरफुल बोल रहा हूँ कि जितने भी बड़े लोग या मंत्री जी हो, सिनेमा एक्टर हो, IPS ऑफिसर्स, सभी का घरों में डॉग तो रहता है। वो सब लोग डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट होते हैं। जो सिनेमा एक्टर को अपन मिलने के लिए भी तड़पते हैं, वो इनसे बहुत ही क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो उनका जो जान है डॉग, उनका जानवर का जान बचाने वाला और ट्रीटमेंट देने वाला ये डॉक्टर डॉग्स मुरलीधर जी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आज अपने सामने आए हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मुरली टू स्टार्ट हिज प्रेजेंटेशन। थैंक यू। Thank you, Professor. Thank you very much. And thank you very much for the wonderful words and for being coming to my hospital and visiting my hospital many times and witnessing the facilities. And thank you for your wonderful words. Thank you, Nararai Kumar garu. Thank you very much, sir. Good afternoon, everyone. Audible, sir? Am I audible to everyone? Yes, you are audible. Yes. Good morning, everyone. First of all, I would like to extend my sincere thanks to the Dicky and the founder president and India president, the Dicky India president and our state president and all the Dicky members and all the entrepreneurs from this community and all the officials who is witnessing this program today and and all the business people who has come forward to look into the business opportunities in the pet industry. First of all, I would like to introduce myself. I am Dr. Muralidhar. My Bachelor of Veterinary Science from College of Veterinary Science, Rajendra, and I did my Masters in surgery, post-graduation surgery of veterinary science. And I served the government for 16 years as a veterinary assistant surgeon within Hyderabad. After serving 15 years, I decided this is not my cup of coffee. The enthusiasm, the businessman in me has not allowed me to stay back in the government service for working for the just 60 to 70,000 rupees salary. So always it was in my mind to do something new, something on my own, to stand up on my own. So that has driven me to resign my job of a government job of 15 years with 15 years of service. Then in 2011, I started Dog Pet Hospital because I did my post-graduation surgery department. I'm closely associated with the dogs and cats. So I'm very sure that I'm very good in the treating the dogs and cats. So I started my pet hospital. After starting the pet hospital, I thought when I'm making a venture, when I'm making a business, so it should be the one of its kind, and we should be stand alone, and I should be stand alone as a brand, not as just small clinic. Earlier, our clinics used to be when I started this hospital in 2010.
There was only some hospitals having by 10 by 10, 10 by 15 room space. And this one, one doctor chair, one examination table, one stethoscope, a couple of medicines. That was called as a veterinary clinic at the time in 2010. But when I started my hospital, I thought, no, I must be something different from this one routine, and I should I should stand as a one of the best example in the pet health industry, because I left my government job and I was passionate to become the entrepreneur, to become the businessman. So with this one, that is the only area which I was confident about myself. I can make this as a take this practice as a pet health industry to the business level. So my self confidence driven me, and then I started the Dr. Dog Pet Hospital as a multi specialty hospital, not like just a clinic by 10 by 12. My Dr. Dog is a multi-specialty hospital comprises of we are providing digital X-ray, what we are giving to the human beings in the same way. We are going with the digital X-ray. We are having 2D echo. We are having ultrasound. We are having color Doppler. We are having operation theater. We do surgeries every day. We have gases anesthesia machine. What we generally in high corporate hospital, what they use for the human beings, we also use the same gases anesthesia for pets. And we have the dog dialysis center is the first time in South India. After Chennai, this is the first private hospital which is having the dog dialysis center. And we also the one of the beauty of us we are serving the pets 24 by 7, where other hospitals which are they working for only for some hours. And I want as I desired this to make this business this practice into business, and I was treating the pets as my own and on my own. As long as I was treating my pets, I was not able to think about the expansion of the business. Though I'm good in my practice, and my clients always wants me to see their cases. They want me to be the treating seat. Then I decided if at all always I'm sitting in the treatment seat, so I cannot expand my business. So then I decided to hire the veterinary doctors and interview them, train them. Then I am putting them into the treatment seat. And now I am having 8 doctors for my hospital. Now these the doctors they're taking running the hospital 24 by 7. And all these facilities what I created, it has not only my idea. It's the idea driven by my clients too. Always my clients they used to come, sir. This facility is not there. If this has been there, the my dog would have saved. So then I used to think of the facility. I created the facility. The same way, one of my clients' dog died with a kidney failure. He could not do much. Then he was crying for the days together. Then it has driven me to establish a dog dialysis center. So now we are serving the many number of dogs which are suffering with the kidney and renal problems. So like with this background, I'd like to say all the facilities now, whatever we have in our Dr. Dog Pet Hospital, it is a totally customer client driven facilities. At the same time, while the as per the treatment side is going on well, then when some clients they were asking, sir, we are unable to come to hospital. Some clients used to say, sir, both of you are old people. I have a pet, but I don't want my pet to suffer. But I cannot drive in this traffic, heavy traffic. Many times, many people they say, sir, we are out of station. My dog is at home, but we don't have anyone to come to hospital. Kindly save my dog. So these are questions that they driven me to start the Vet on Wheels. Vet on Wheels is a pet enterprise. I wanted to give the pet owners the doorstep treatment, whatever we are giving in the hospital, except surgeries. So I want to give all the facility to my clients at their doorstep whenever they're in need. Whenever on call based, whenever we get a call, sir, my pet is designed my vehicles. Please show the vehicle. I have designed my vehicles. Already we are equipped with the 3 mobile dog clinics by name Wow, Vet on Wheels.
These three vehicles, we are dividing the city into three parts as of now, and we are serving them. These are the vehicles which have already we are designed. Is a wet on wheels. This will have all the necessary equipments which are required for the treating the pets in emergency, vaccination, and blood sample collection, and grooming, and along with the dog food and necessary shampoos and vaccine sales also. So now we started this facility to cater the clients at the doorstep. We have received tremendous response from the clients. They were appreciating us for this. When the video is ready, yeah, the YouTube video. When we started, this facility, we could able to save many number of dogs at the doorstep, and because that doesn't require them. The client need to come to the hospital and spend his whole day, spend his some few valuable hours of their day-to-day life, and sometimes the dog is very sick, and they spoil the total car and the fuel cost and traffic. Again, everyone knows that what is the problems in the traffic. So driving all the way, and so now when we started this one, people are appreciating for this all these reasons. Sir, you have saved my time. Sir, you have saved my car not being spoiled. Sir, you saved my fuel cost. Sir, when we are out of the station, you saved us. You saved my pet. So that's the way I was motivated. And during this time, so I had interaction with say Sri Padmasri Raikumar Garu, and so I requested him to come to my hospitals to see the facility. And he was kind enough to come here and see the facility. And then he only suggested, Doctor, why don't you take up this as a franchise model and because when it's giving a good money for you, why not for our people across the India? So Padmasri Raikumar Garu, the advice he gave me is really inspired and started the motivation in me. Then then we started preparing the business model to expand into the as a expansion for the all over India, and this mobile veterinary clinic that is called Vet on Wheels as a franchisee model. So we have developed the franchisee model. We being in this industry for the 10 years as my private practitioner, and seen the in industry, the growth and the potentiality, and the people's what they want being known. So we had designed all the income generating activities in this vehicle. Then on the Vet on Wheels, we have the treatment as one of the major part, so that generate the income. Second thing is the grooming. Grooming is one of the biggest industry in the pet industry. The grooming itself is the parallel income generating as per the treatment, because the dogs will get soiled, get dirty, or get smelly within a week. So though the owners will bear the foul smell for 1 week, at least definitely they have to go for the second week. Definitely they have to go for the grooming. That is called dog bathing, or sometimes haircuts, sometimes totally stylish haircuts. Uh, they go for the nail trimming and everything. When people, um, so the the client always wants their pets to be clean, because some of the owners they keep the dogs in their beds and in their bedrooms. So they want all the things clean and neat. So that is the reason they need grooming services. This is also equally income generating as per the treatment. And also we are selling the dog food in the vehicle. So we take the order from the clients what they want. So we keep stock the dog food and necessary medicines, some of the dog toys, some of the belts, chains, and bowls. All these things we stock in the vehicle, and we take take along with the vehicle, and we sell the clients. It is also one of the income generating in the mobile Vet on Wheels.
Also, the grooming is the one is the income generating, treatment is one is income generating, selling a dog food is one income generating, selling accessories is one of the another income generating, and third and fourth is the we collect the blood samples for diagnosing their health problems, and we give these samples to the hospitals and because since we don't have the diagnostic equipments on the vehicle, so we need to refer to some of the labs. In the labs, when we refer, definitely they give up to 15 to 20% of the referral charges. At the same time, as we don't have the surgical facility in the vehicle, so we refer the cases to the surgical cases. We refer to the hospitals. So there also the hospital people also they share the referral charges for the referring the one of the surgery. This is also one of the income. So totally 6 to 7 income generating activities will happen on this vehicle. And this this vehicle, because the cities like metro cities like Hyderabad and the type 1 cities like a district headquarters, and even nowadays type 2 cities also having very much great potentiality for the having this business on road. And since having the India, the population of the 2 crore, more than 2 crores of the pet population, more than 40 lakhs of the cat population, and people being the day by day, the days are becoming, the nuclear families are emerging. Many people, they are only 1 or 2 people they are living in as a family. So this nuclear families as they emerging, they don't have any other people except the pets as their companions. Now the pet demand for the pets is being increased. Every year, as 6 lakhs pet owners are coming up as per the pedigree. And the dog food sales in India is increasing like anything now. Earlier in 2000, in 2000, only the pedigree was the commercial dog food company. Now we have 50 more than 18 dog food companies in India. Out of them, 8 are the immense multinational companies, which is around the multi-crore business, and in multinationals they are running operating the businesses. In the same scenario, the pet pharma also increased. The pet pharma is reaching more turnover in India, and the pet accessories. Pet accessories again is one of the beautiful business area one can think of. Manufacturing the pet accessories is one of the best enterprises. I have seen I have been to one of the expo in China, in Shanghai. There, our Indian people established, they erected the stalls. Up to 8 to 9 people, they established the dog bowl companies. That the dog bowl is wanted to feed the dogs. Having such a big exhibition stall there, 8 to 10 members from India alone. From India alone, 8 to 10 people, they were having the only dog, they manufacture only dog bowls for them feed the dog food. Now in other parts of the world, there's a lot of technology being used in the as a pet accessories. They have all the automated toys for the pets, automated, just like what we have for the children. All are the computer, all are with the remote sensing, all are with the sensors. So they even there's a one toy I've seen in the exhibition which will track the pet's movement at the home when you are not at home. So you can just on the camera and go to the office. The toy will follow your pet all the times, and whenever you see on your cell phone, the toy will show that where is your pet, what it's doing. So these are the technology being used in the pet industry, and they're making this into manufacturing industry with the pet toys, and this pet toys is again is a big industry, and grooming is the second big industry. So this is the this, as Sri Nara Rai Kumar sir told, this is a totally untapped area, untapped business, and still it has to emerge as one of the corporate business, one of the industry to be recognized as the industry, one of the area to be recognized as the pet industry, not as a pets, and exports and imports of the pets. And now each one pet costing about 30,000. Earlier it was about 15,000. Now if you want to go and buy one pet, is about 30,000. The person who has purchased the pet for the puppy for 30,000 is ready to spend any money unless
well-being and as a treatment and his maintenance for grooming and for the food he's ready to spend. Because when the puppy comes to their home, the owner and the members of the family, they adopt him as a member of the family, and they think that there is their brother, their sister, and the parents think that that is their another child. So when it comes to the matter of the pet, it is a very much emotional attached animal. It's no more an animal; it's emotionally attached to any member of the family. So the when any necessity and when any crisis comes with health, I have seen many clients stating that, sir, no, my money is not a bar. Please save my pet. If you want 2 lakhs, I am ready to spend 2 lakhs. I'm 5 lakhs, I'm ready to spend my. But please save my pet. So that is the emotional attachment with the pets. So that is the reason we have converted each and every facility as a client need, as a and as a pet need for to save their lives also. So this is when this lies, the responsible lies on us when we take this business as a business, this service as a business. So the responsibility also lies to cater the clients in the better way as per with the human beings. So that's how we started this bet on wheels and is having a 6 to 7 the my income generating activities for the vehicle and the vehicle on the call. We have developed the app also, Wow app. Anyone can see in the app in the mobiles WVOW. The app is there. The client can call us, and the moment that we get a call to our centralized control room, please play the video. Sandu. Oh, no. Okay. Okay. नेट आ गया है, पर रो रो खा रहा है, सही नहीं आता है, ऊपर बहुत बढ़िया चलता है। Thank you. We have वीडियो भी दिखा दो also developed for the convenience of the pets, pet owners. We also developed the Wow app. Is this Wow app? We have developed the Wow app also, so the client can install the Wow app and they can book the appointment. The moment we book the appointment, we get the centralized our customer care will get the call, and our customer care people will talk to them, and after that our the message is intimated to the doctor nearby the vehicle who is on the duty. So the nearby Wow vehicle will go to the client, and we see the treatment. We give the treatment for the concerned pet for the concerned problem. If the problem is not resolvable, we'll bring them to the hospital. Or if the problem can be need that particular dog needs any medical test and medical uh, diagnostic facility, we take the blood samples and we bring here and we analyze and we do the treatment. And the client can pay the money also online. We have the tie with the Bharat Pay, and we have the swiping machines along with the vehicle, along with the GPS in the vehicle. So for this one, the cost estimates is coming around for any entrepreneur whoever wants to take a franchisee. The cost is coming to 25 lakhs.
అది display చేయి. Yeah. It's coming to, so in this one, the ambulance cost, we are taking the vehicle and the total vehicle will be being fabricated and concerned equipment, what are required for the grooming, what are the material required for the treatment, and the medicines required will be equipped in the vehicle. So the ambulance cost, I just want to give the split up. Ambulance cost and fabrication. Ambulance cost is 10 lakhs. The vehicle cost. The fabrication cost is 3 lakhs, and the branding is 25,000. So top total is subtotal is coming to 13 lakhs 25,000 vehicle as a shell and with the fabrication. And the equipment for the clinic and grooming equipment. The grooming equipment is being bought by the Shanghai. They are getting all the imported equipment. So because they are making very good, and with all sensors, everything is very good from there. So we are importing from them. All the vehicles will be fitted with the latest equipment. That's for the grooming and this clinic. So and we are giving the IT and miscellaneous, and this is coming to 4 lakhs. The vehicle cost is 13.25 lakhs, and the equipment and grooming and clinic and equipment is coming to 4 lakhs. The business promotion and others, licenses and others, stock 2 lakhs rupees, marketing fee 1.5 lakhs, and subtotal is coming to 4 lakhs. The franchise fee is 3.75 lakhs. The subtotal is coming to, the total amount is coming to 25 lakhs. And here, I would like to say, inform you that the overrates per month. Here we'll be costing for the doctor fee as a 40,000 rupees, and one driver as 15,000 rupees, and one groomer as 15 to 18,000 rupees. So 70,000 rupees will go for stock, and the vehicle EMI, and the loan, vehicle and loan EMI, and the 15,000 rupees of fuel cost, because it will be will be giving them the radius. So it's about 5 to 10 kilometers radius. So within that radius only one vehicle, the jurisdiction. So the fuel cost will come to up to 15,000 rupees per month, as because we are running right now. So 50,000 and 70,000 for the stock, 85,000, and vehicle EMI and vehicle loan EMI comes to up to the 30,000 rupees. And next is the medicine. It's about 40 to 50,000 rupees medicine every month we need to buy, and we need to stock in the vehicle. And these are the overheads. So it comes to 1.7 to 1.8 lakhs per month as a overheads. This is the every month the expenditure after taking the franchise fee. This every month they have to bear with this one. And here we are starting the income generating after 6 months only, generally, because this needs the clients has to see your facility, the client has to build your facility, the client has to believe the doctor, the client has to be comfortable in the vehicle, the client has to be comfortable with the staff who is being and handled by the or back in the vehicle. So once this all done, at least it will take minimum we generally take as a 6 months as a stabilizing period. In this one, the first month, if you take in the first month, we have the 5 revenue areas. We have taken into consideration 5 revenue areas. 5 revenue areas. One is A is the treatment. The B is the surgeries, what we refer to the other clinics, and we'll get the referral charges on that. And third is the diagnostic services, what we refer to other hospitals, and we get the referral charges for that. That is also one of the income generating. And fourth one is the grooming services. In the grooming services, we have the dog grooming, the bathing and hair cutting, and nail trimming, ear clipping, dental wash, mouth wash, and even for puppies, puppy bath. These are all the things that comes under the grooming. This grooming also one of the income generating activity. This is one of the major income generating activity. This is we are giving much importance in the vehicle, because this is needed by the most of the clients many a times. So this is one of the major attracting point for them. And other one is the
the product sales, the dog food sales. Other one is the dog food sale, the dog food sale and accessory sales. This is also one of the income generating for the mobile vacuum. If you take into consideration, since from month, this the beauty of in this business is, since from month one you will generate the income. Maybe it is the small in the beginning, but later it will be more. But this is the only business where you take the money and give the service from the first day onwards. The first client onwards, you'll get the money and get the start returning. So in the first month, if you take, I will take. I'm just explaining about the first year. In the first year, in the first month, if you take into consideration the treatment, we have taken very least of the least figures, so that to ensure that the what we talk should come in on the field. So we are taking minimum less than 2 cases per day in the first month. Less than 2 cases. In the whole day, we're taking only less than 2 cases. And at the ticket size also be kept very, very less. It's coming to 600 rupees. But generally it will be more. Not less than 1,000 rupees. If any dog, any van goes to any home, now we are charging is 6,000 rupees minimum. So here we are taken as only 600 rupees and less than 2 cases per month is we are generating 30,000 rupees in the first month as a treatment income. Second income is the pet owners opting for the surgeries. I have taken in every 8th day, every 3 to 4 day, we have taken one number as a surgery referral, because we don't do the surgeries in the vehicle, so we have taken surgery referral. One surgery case on average we kept the ticket size is 6,000, but generally 6,000 we is starting rate, and the surgery rate cost goes up to 35 to 50,000 rupees. If orthopedic surgery is there, we charge about 45,000 rupees in our clinic, Dr. Dawes Hospital right now as in today. We are charging 40 to 45,000 rupees for the one orthopedic surgery. And if we refer in any such cases, even though it is a high amount, but we are taken as a minimal rate as a 6,000 rupees. And we are taken only 8 cases in the month of first, 8 referral cases. And we'll get the income of 45,000 rupees for that. At the same time, by referring the diagnostics also, if any dog is not well, so we need to diagnose the problem. So we need to take the blood samples and send to the lab. Even with this one, here we are taken 850 rupees as the minimum ticket size. This is also very, very low. It generally goes about 2,000, 3,000 rupees, sometimes even 4,000 rupees for all the diagnostics. So here we are generating through the referring the blood samples, we are generating a 15,000 rupees income as income. And in the same manner, in the grooming services, we are taking less than 3 cases in the month of first. Less than 3 cases. So that is generating as a ticket size 600, but generally ticket size is more than 1,000 rupees. But we are taken least of the ticket size is coming to 48,000 rupees income in the first month. And the same with the by selling of the other food items and dog accessories and all put together, we will be the ticket size of 600. We are generating 12,000 rupees, and total in the first month we are generating 90,000 rupees. In the same manner, every month in second month also we are taken only 2 cases per day as a treatment. And in the first month we have taken 8 cases for the reflux surgeries. Second month we have taken only 9 dogs, only 9 cases. So we increased only one in next month that we are generating 54,000 of income. And at the same time, with for the referral of the dog diagnostics, we have taken 10 cases more. So is coming to 24,000 rupees. So likewise, we are, and in the same way, the chart is there. Anyone can see that. Someone can later on. I can share you this economical, the financial reports also. I think it's very hard to follow what I'm telling because the subject is new. Total, this is a medical subject, so it's very hard to compare. So we'll share this sheet, and like this month by month. So every month, if you're going as we roam in that area, in the particular area, as our vehicles are visible, as our visibility is more every day by day in that particular area, so that definitely client conversion will be more. As the client conversion is more, and as we trade and we do since we have the
good back end team, and we'll select the good doctors, and definitely the work will be monitored by us, and definitely the client following will be more, and the client's satisfaction levels will be more definitely. So the client increase definitely is there. So we ensure that the client will be increasing, because since the complete treatment van every day moving in their own area, after some time people will be owning the vehicle. Okay, for any problem, call Wow. So they'll come home and take care. So that's how we want to build the reputation in the market. So if, with this one, at the end of 6 months, we are generating 1,59,000. So here the break even starts after 6 months. And at the end of the first year, 12th month, we are generating 2,28,000 rupees. Here the profit starts. Already profit started. The profit starts in the month of 9. So by the month of 6, the break even. What are the expenses you are spending per month? Overheads are gone, including the EMI, the loan EMI also. After we are sure about after 10th month onwards, the individual franchise owner will start gaining the benefits of it. After 10th month, definitely they will be in profits. This is what we have come across, and with experience I'm telling, and with experience we done lot of homework, and we have taken minimum of the minimum and least of the least cost. These all the comparison, and what the values what I'm giving is the least of the least, and what the number we have taken for the per day is the least of the least number. What we can achieve more than this. So within 5 years, each individual the franchise owner can at least get not less than 15 lakhs profit out of it. Within 5 years, more than that, but I'm telling least of the least 15 lakhs to 18 lakhs profit. Definitely they'll have it on their hand. If they, so for the benefit of the people who talk on Hindi also, just I would like to share a few points, the major points in Hindi. So just for the benefit of the some North Indian, other parts of India, other part of India. डॉक्टर डाग पेट हॉस्पिटल ने मैंने स्टार्ट किया था. आई एम ए वेटरनरी डॉक्टर. मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सर्जरी में. मैं डॉक्टर डाग हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट किया है. तो हमारा डाग हॉस्पिटल में कुत्तों के लिए और बिल्लियों के लिए एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल रखा है हम इधर. इसके लिए 2D एको करते हम. हार्ट का जो प्रॉब्लम रहता है एको करते. हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है ECG निकालते. एंड किडनी का जो प्रॉब्लम होता, किडनी का रिफाइनरी का प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम उसको हमारे पास डायलिसिस सेंटर रखे, और डायलिसिस से हम उसको क्यूर करते. और जो पेशेंट्स को ऑपरेशन करना पड़े तो हम हमारे पास अच्छा ऑपरेशन थिएटर है, आदमी को जैसा ऑपरेशन थिएटर है वही ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते. और उसको पोस्ट ऑपरेट के लिए हम इनपेशेंट रखते, और पोस्ट ऑपरेट के लिए आईसीयू में भी है, आईसीयू रखते हैं हम. आदमी जैसा आदमियों के लिए जैसा होता है वैसे रखा हम. इसमें हर एक चीज हम वो क्लाइंट के हिसाब से हम बनाए हैं. और एक क्लाइंट आते रहते हैं हमारे पास, सर हमारे कुत्तों को ये होना है, हमारे कुत्तों को वो देखा है, हमारे कुत्तों को ये प्रॉब्लम हो गया, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है क्या? ये फैसिलिटी है तो मेरा कुत्ता बचता था. हाँ, ऐसा ऐसा बोलते बोलते हमारे लोग वो लोग दे हमारे को ये सोचने में बहुत मजबूरी किया हमारे को. अगर आगे कैसा बढ़ाना, आगे फैसिलिटी कैसा देना, और क्या फैसिलिटी देना, कैसे फैसिलिटी देना, ऐसा एक एक फैसिलिटी या फीडबैक हम क्लाइंट से लेते लेते ये पूरा अभी तक मैं बोला, ये पूरा ये फैसिलिटीज हम इसलिए बनाए हैं. अभी यही सिलसिला में ये क्लाइंट्स भी आगे भी बोल रहे थे, सर हम घर पे नहीं है, हम दोनों अभी जाते हैं, हमारे घर के पास कोई भी नहीं है, कुत्ता बीमार पड़ा है सर, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना. कोई आते सर हम दोनों बुढ़े हैं, हम घर पे हम आपको हॉस्पिटल तक नहीं लेकर सकते, कैसा आपको जिसको बहुत बीमारी हो गया उसका इलाज करना, कोई घर पे आके करते क्या. एंड कोई लोग बोलते सर हम आउट ऑफ स्टेशन है, हमारे खुद घर पे है, सर हमारा वॉचमैन अकेला के पास गाड़ी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करना. सो ऐसा एक एक जने का एक एक तरीका है. एंड कोई लोग बोलते सर हमारे पास कार नहीं है, कोई लोग बोलते सर ट्रैफिक ज्यादा रहते है टाइम पे हम नहीं आ सकते, आप लोग आ सकते क्या. ये पूरा हमारे को सोच में डाल दिया. सोच के हम एक दिन इसका
ये लोगों को अभी आजकल पूरा घर के पास आने का पूरा लोग पसंद कर रहे हैं। पूरा लोग उसको अम, आदत हो गया। वैसे स्विगी बोलो, खाना बोलो, स्विगी का घर पे आके फूड डिलीवरी हो रहा है। घर पे आके पूरा ग्रोसरीज डिलीवरी हो रहा है। ऐसा हर एक चीज को लोगों देखते देखते अभी कुत्तों का पीछे भी यही बोल रहे हैं, सर आप घर पे आके ट्रीटमेंट करते हैं क्या? सो इसलिए ये पूरा हम सोच के इवन न्याज हम उसका हर एक चीज को मान लिया, हर एक डिमांड को मान लेके हम जो हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल बनाया, ये भी अच्छा हॉस्पिटल है थर्ड बोल के हम वेटरन व्हील्स बोल के वेटरनरी डॉक्टर ऑन द व्हील्स बोल के हम तीन गाड़ियां ले लेके पूरा तीनों गाड़ियों को एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसे उसका पूरा मॉडिफिकेशन करवाया। ये मॉडिफिकेशन करने के बाद ये हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता है, एक डॉग ग्रूमिंग रहता है। ग्रूमिंग बोले तो उसको नहलाने के लिए, हेयर बाल कटाने के लिए, खून कटाने के लिए, हेयर क्लीन करने के लिए, आंख साफ करने के लिए, आंख के साथ पास बाल रहता है वो बाल साफ करने के लिए, ये पूरा काम वो ग्रूमर करता। सो एक ड्राइवर रहता, असिस्टेंट ड्राइवर का असिस्टेंट, एक डॉक्टर रहता, एक ग्रूमर, तीन लोग जाके पास हम कॉल सेंटर भी रखा है। जो भी जिसको भी जरूरत पड़े तो हम अम, इसमें ये प्लेटफॉर्म में वाव बोल के ऐप भी डेवलप किया। और ऐप डेवलप किया तो वो लोग ऐप में बुक कर लेते। ऐप में बुक करते तो कॉल सेंटर वाला और डॉक्टर को बोलते, वो नियर बाय जो भी डॉक्टर आता है उसको बोल देते ऐसा कुत्ता आ गया, देखो ऐसा कुत्ता बीमार है इस जगह पे, इज द ओनर, इज द फोन नंबर। तो उसको फोन करके हम जाके उसका इलाज करते। उसको अगर ठीक नहीं कर सके तो उसका जो ब्लड सैंपल लेना तो ब्लड सैंपल ले लेते, नहीं तो उसको कोई डॉक्टर के पास ऑपरेशन भेजने तो ऑपरेशन भेज देते। ये पूरा काम इसमें होता। और इसका ये वेटरन मिल्स में एक छह तरीके का इनकम जनरेशन का एक्टिविटी हो जाता। एक तो ट्रीटमेंट हो जाता। सेकंड थिंग इज दूसरी बात है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग नहलाना, नाखून कटाना, ये बाल काटना, बाल स्टाइलिश बाल काटना, ये पूरा काम है। ये एक बड़ा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रीटमेंट का साथ साथ में चलता है, दोनों इक्वली मनी जनरेट करते। उसके बाद में हम जो कुत्ते का अगर सर्जरी करना पड़ा, या कुत्ते को हम गाड़ी में सर्जरी को ओटी नहीं है उसलिए उसको हम दूसरा डॉक्टर को दूसरा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल में भेज देते। भेज देने के बाद वो लोग हमारे को रेफरल चार्जेस देते, और रेफरल चार्ज भी हमारे को एक इनकम तरीका हो जाता। वैसे ये कोई टेस्ट को भी करना है, कोई कुत्ता को बीमार पड़ा, हमारे को खाली देखने में फिजिकल एग्जामिनेशन करने में हमारे को उसका बीमार पता नहीं चला, इसलिए उसका ब्लड सैंपल लेना पड़ा। ब्लड सैंपल ले लिया और दूसरा हॉस्पिटल को भेज दिया, तो वो लोग भी कोई रेफरल चार्जेस भी भेजते। ये भी एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा हमारे पास आजकल कुत्तों का, हमारे को आदमी का कुत्ता खाने के लिए कुछ भी नहीं तो फिकर फिकर नहीं, मगर उसका कुत्ता को तो पेडिग्री खिलाना है। ऐसा जो 2000 में जब पेडिग्री कंपनी बनाया था, वो एक ही कंपनी आया था अमेरिका से। जब हम 60 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो का खाना कौन खिलाता बोल के हम डॉक्टर लोगों को पूरा खुद आते थे। बट आज 240 रुपए 1 किलो का खाना बेच रहे हैं वो। अभी खाली पेडिग्री एक ही नहीं है, इंडिया में 18 कंपनी पेडिग्री डॉग फूड कंपनीज है। उसमें से उसमें से 8 कंपनी सीमेंट्स है और मल्टीनेशनल कंपनीज है। पूरा दुनिया में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, धंधा का वही। इतना पोटेंशियल अब इंडिया में जनरेट हो गया। 2 करोड़ का ऊपर पेट कुत्ता है, वो पालने वाला कुत्ता है, और 40 लाख पालने वाला बिल्लियां है। इस मार्केट अभी हर एक साल में 6 लाख से 7 लाख पेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी में बढ़ते जा रहे हैं। उसका प्रोडक्शन ऑफ द पेट मेडिसिन का वो इंडस्ट्री बढ़ते जा रहे हैं। और हर एक इंडिया में जो मेडिसिन नहीं था, अभी बाहर बाहर दूसरा कंट्री से नए नए मेडिसिन, नए नए मॉलिक्यूल्स दे इम्पोर्टिंग एंड डूइंग मार्केटिंग। एक हार्ट का टैबलेट का, एक डिवॉर्मिंग का टैबलेट है, रिसेंटली लॉन्च हुआ। 2000 का एक टैबलेट, एक कुत्ते के लिए 2000 का टैबलेट डिवॉर्मिंग के लिए। और उसका काम भी ऐसा रहता है। अभी तक इंडिया में था, अभी 1 साल से अभी इंडिया में भी वो भी आया, उसको देख के और 2-3 कंपनी भी लाया। इतना पोटेंशियल ये इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री पूरा अभी तक अनटैप्ड है। अभी तक कोई इसको एक कॉर्पोरेट बिजनेस कोई नहीं बनाया, इसको कॉर्पोरेट पेट फार्मेसी कोई नहीं बनाया।
corporate pet manufacturing, tires manufacturing, pet food manufacturing. Pet food manufacturing already these people have ये लोग बड़ा लोग स्टेक होल्डर्स है। अगर अभी तभी भी हमारे को मौका है, अभी मैंने तो दूसरा कोई भी ट्राई कर सकते हैं। ये पेट एक्सेसरीज का वेरी बड़ा बिजनेस है। ये पेट एक्सेसरीज का, पेट ड्रेसेस का भी आजकल बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। अभी हर एक कुत्ता को लोगों ड्रेस पहनाना चाहते हैं, हर एक कुत्ता को उसका शू पहनाना चाहते हैं, हर एक कुत्ता को गागल्स पहनाना चाहते हैं। ऐसा ये इंडस्ट्री अभी तक अनटैप्ड है। अभी भी आप लोगों में इसमें आपको एक ग्रुप में अगर कोई चाहते हैं और कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, पेट एक्सेसरीज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री नाउअडेज एंड इट्स बूमिंग लाइक एनीथिंग। इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहता है। सो ये पूरा ये वन इज दैट हमारा मोबाइल क्लिनिक में बेटा मिल्स में एक तो ट्रीटमेंट का इनकम आता, एक ग्रूमिंग का इनकम आता, एक सर्जिकल केसेस रिफरल में इनकम आता, एक डायग्नोस्टिक केसेस रिफरल में इनकम आता, एक डॉग फूड सेल्स में इनकम आता, डॉग एक्सेसरीज में इनकम आता। से ये पूरा 6-7 तरीके का इनकम जनरेशन एक्टिविटी इसमें चलता है। इसलिए दिस इज वेरी मच सक्सेसफुल मॉडल। हम 3 गाड़ियां लिए हैं हैदराबाद में, 3 गाड़ियां चला गए अभी हैदराबाद को 3 जोन डिवाइड करके एक जोन में चला गया। अभी ऐसे मेट्रो सिटीज में, टाइप 1 डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स में, टाइप 2 सिटीज में भी ये धंधा का बहुत मौका है और धंधा का सक्सेसफुल का चांसेस ज्यादा रहता है। हर एक घर के साथ में आने के लिए लोगों को आदत हो गया। अभी ये भी ऐसी ट्रीटमेंट आपका घर के पास जाके ट्रीटमेंट करे तो कौन सा भी सिटी होने दो, कौन सा भी स्टेट होने दो, आपका कुत्तों का ओनर तो आपको वेलकम करेगा। ये सर्विस हमारे घर के पास आके अच्छा सर्विस दे रहा है बल्कि। तो इतना प्रॉफिट इसमें है। इसमें एक गाड़ी लगाने के लिए हम इसको वेन पद्मश्री राय कुमार साहब मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था एक बार हमारे हॉस्पिटल में आके देखने के लिए। उन्होंने हॉस्पिटल में आया, देखा था एंड उन्हें खुद आइडिया दिया जब इतना अच्छा मॉडल बनाया इसको इतना अच्छा मॉडल बनाया क्यों इसको में लेके जाते हमारा आदमी को क्यों मैं भी यही कम्युनिटी का मैं भी सोचने लगा कि बाद में बिजनेस मॉडल डेवलप किया, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल हुआ बेटा ऑन व्हील्स। अभी हम पूरा इंडिया में एक सिटी में इसको फ्रेंचाइज देना चाहते हैं। इसके लिए एक फ्रेंचाइज का हर एक इसका एक गाड़ी का हर एक महीने का खर्च आता है। एक 40,000 रुपीज से डॉक्टर सैलरी रहता, 15,000 ड्राइवर का, 15,000 ग्रूमर का चार्जेस, तीनों लोग गाड़ी के साथ में जाते। और लोन का EMI रहता अबाउट 30,000 का करीब 35,000 का करीब रहता। और बाद में इसको हर एक महीने का दवाई लेना पड़ता 45,000 का, और एक 15,000 उसका फ्यूल होता है। ये पूरे लेके 1,72,1,80,000 तक उसका हर एक महीने का एक्सपेंडिचर होता। ये पूरा अपन पहले मंथ ये पूरा जो भी मैं सर्विसेज बोला इसमें इनकम जनरेटिंग सर्विसेज बोला, वो पूरा सर्विसेज से पहला मंथ में 90,000 इनकम आता। ये एक ही चीज होता है, इससे एक ही बिजनेस होता है, पैसा लेके धंधा करो। दूसरा धंधा में ऐसा नहीं होता पहले उधर दे दो पैसा बाद में ले ले। पहला केस है इसमें से पैसा आता। सो जो पहला मंथ में 90 आता, 6 महीने के बाद 6 महीने बाद कम से कम 1,50,000 आपका जो भी एक्सपेंसिव ओवरहेड्स है पर मंथ विल बी रीचिंग नियर अबाउट उसका नजदीक में रीच होते। फिर 1 साल के बाद 2,30,000 इनकम। हम ये पूरा बहुत दिन में कितना करना उससे बहुत कम नंबर लिया है। अमाउंट भी एक कितना चार्ज करता उससे हम लीस्ट लेवल से लेकर पूरा कैलकुलेट किया है। सो डेफिनेटली ये तो पूरा सक्सेसफुल मॉडल हो जाता। आफ्टर 7 साल के हर एक आदमी जो भी फ्रेंचाइज लेता है वो 15 से 20,000 तक आराम से कमा सकते हैं। ये दिस इज मैं अभी ये पूरा सक्सेस में इसमें हम शेयर करते हैं उसमें। So any questions? Thank you very much. If any doubts are there, please let me know. Thank you, Dr. Muralidhar ji. It was a wonderful presentation.
The franchisee model is really very interesting. Sound. This is the first kind of Better. model, at least I have seen. And I wish you all the best for this project. Only just only one query Sir, in the chat box. Mr. Dilip Kumar has asked, send business PPT. sir. I don't know whether it is possible or not. If it is possible, then let us know. We will No, no. coordinate. No, please come again, sir. Please come again. Am I audible, sir? Yes, sir. Somebody has asked for the business PPT presentation. Yes, sir. We'll share you, sir. We'll share, sir. Okay. So, at present, there are no other queries. I will again request all the participants, if you have any query, then please post Yes, it in the chat box. Thank you, sir. सभी participants को मैं request करूंगा, franchisee model लेके कुछ भी query होगा तो वो chat box में कृपया question query को type कर दे, मैं एक एक करके वो follow up करेंगे. Otherwise, I'll share my number, sir. Anyone can note down my phone number. Yes, please, write it in the chat box. My phone number is 924. So can you write it in the chat box, sir? 924 65 48 100. I repeat, 924 65 48 100. Again, I repeat, 924 65 48 100. Thank you. Thank you, Dr. Mullader, once again for beautiful presentation. And our DP corporate office will coordinate with anybody interested in this franchisee model. Now, taking this program ahead, may I now request Ms. Mamta Madam from SIDBI kindly share a few words on this platform. Yeah, good evening, everybody, to all the participants. I am Anamika, and today I'll be taking the session on behalf of SIDBI. Today I will give some highlights about the Stand Up India scheme. Hello, can everybody hear? Yes, ma'am, please carry on, ma'am. Hello, hi. Yes, ma'am. Anamika, ma'am. Yeah. I request you to continue. Yes, ma'am. Yeah, today I will give some highlights about the Stand Up India scheme. ये SU आपको सब पता तो होगा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, दिस वाज अनाउंस्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 15 अगस्त 2015, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम वाज टू प्रमोट द बैंक फाइनेंसिंग of the greenfield enterprises, which to promote SC, ST and a woman entrepreneur. और ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटी जो है, ये बैंक लोन is available for the loan amount of rupees 10 lakhs to rupees 1 crore, and ये जो बैंक फैसिलिटी है, this is available from all the commercial बैंक से ये लोन, बैंक लोन का फैसिलिटी मिलेगा आप लोगों को स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर. एंड ये जो भी ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस जो होगा, दिस शुड बी इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड द ट्रेडिंग सेक्टर. यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया का मेन, आई विल से मेन खासियत या जो भी है, दिस इज फॉर द ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज लाइक जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसका मेन प्रॉब्लम होता है बैंक लोन मिलने में. दैट्स व्हाई ये जो भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए खास है, एंड मेनली फॉर द SC, ST एंड द वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए. And this
scheme has been extended up to 2025. Actually, this was till 2020. उसके बाद extension होके 2025 तक ये scheme available होगा. And मेन जो भी एस्पिरेंट होता है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्कीम तो लॉन्च हो गया एंड उसके बाद उनका मेन प्रॉब्लम होता है कि ये कहाँ कैसे अवेल करे उन लोगों को मीन्स लोन कैसे लिया जाए उसके ये जो भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर अगर जो भी लोन लेना चाहते हैं इन एक्चुअली दो तरीके होते हैं एक तो दे कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपना जो भी प्रोजेक्ट प्रोफाइल जो भी रेडी हो गया है वो सब लेके दे कैन गो टू द नियरेस्ट बैंक ब्रांचेस एंड उसके बाद साथ डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग द स्कीम इसको कैसे अवेल किया जाए या कुछ कमियां है तो दे कैन डिस्कस आउट विद एनी ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक ब्रांचेस और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है इनको पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी इसमें ऑप्शन है इसमें www.standupindiamitra.in ये जो वेबसाइट है इसके अंदर जाके दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ एंड ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इसमें ये जो हमारा पोर्टल है दिस इज नॉट ओनली अबाउट द लोन एप्लीकेशन इसमें फैसिलिटी दिया जाता है कि अगर कोई न्यू एस्पिरेंट जो है वो लोन लेना चाह रहा है बट उसका प्रोजेक्ट है वो बनाने में कुछ दिक्कत हो रही है इसमें एक और ऑप्शन है हैंड होल्डिंग सपोर्ट का तो डिकी इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिव हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो ऐसे एस्पिरेंट को गाइड करते रहते हैं जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है दे कैन टेक द हेल्प ऑफ डिकी एंड इसमें पोर्टल में जो प्रोफाइलिंग में या जो लोन एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होते हैं वो मीन्स ये पोर्टल के अंदर भी ये सपोर्ट मिल जाएगा एंड यू कैन अप्रोच टू और डिकी के जो भी कोई ऑफिस है उस पे भी जाके डिकी के साथ आप सपोर्ट ले सकते हैं इसमें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा दिमाग में आता है कोई लोन लेने के लिए बैंक में जाता है तो ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि लोन लूंगी तो ये कोई कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेंगे कोई भी एप्लीकेंट जाता है तो इसमें ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसके अंदर पे दे आर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर पे ये है कि ये लोन जो है इट कैन बी कवर अंडर ऑप्शन दिया जाता है कि अगर उनके पास सिक्योरिटी है दे कैन प्रोवाइड हाँ दे कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी और इसके स्कीम में गारंटी ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड भी है जो अगर जिसके पास कोलेट्रल कुछ देने के लिए है नहीं वो क्रेडिट गारंटी में भी कवर कर सकते हैं बट ये जो डिस्क्रिशन है बैंकर के ऊपर होता है कि ये जो भी उसका प्रोजेक्ट प्रोफाइल और जो ये किस मीन्स कोलेट्रल में कवर करना है कि क्रेडिट गारंटी में कवर करना है ये बैंकर के ऊपर डिपेंड होता है कि हाउ दे वांट टू टेक द सिक्योरिटी और दूसरा मेन चीज आई वांटेड टू से इज दैट कि अभी जो रिसेंटली जो ड्यूरिंग द यूनियन बजट जो हुआ था उसमें एक खास दो चीजें अनाउंसमेंट हुआ है ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम को और भी एक्सपैंड करने के लिए एक तो ये था कि जो मार्जिन मनी 25% देना पड़ता था टू द जो भी प्रमोटर या जो है उनको दैट हैज बीन रिड्यूस अप टू 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो पहले 25% में मीन्स जो ज्यादा कॉस्ट लेके आना होता था वो रिड्यूस कर दिया है 15% उसके जिसके पास ज्यादा मार्जिन मनी नहीं है इवन दे कैन अवेल द लोन नाउ एंड दूसरा एक और खासियत बात है कि यहाँ पे था कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर तो ऑलरेडी अप्लाई था बट काफी लोगों का ये था कि जैसे कि रूरल एरिया में होते हैं कि एक्टिविटीज दैट इज अलाइड टू एग्रीकल्चर उसको भी इंक्लूड कर दिया है ये स्कीम में जो पहले नहीं था तो जैसे कि पीसी कल्चर हो गया बी कीपिंग हो गया एग्री क्लिनिक हो गया एग्री बिजनेस सेंटर ये सब चीजें जो विच रिलेटेड टू एग्री प्रोडक्ट है उसको भी अलाउ किया गया है फ्रॉम नाउ तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो हम लोग रूरल एरिया में सेमी अर्बन एरिया में जो
उनके पास जो बी कीपिंग हो गया, ये सब एग्री अलाइड एक्टिविटी में जो करते थे, और हम लोग जो फार्मर्स भी हो गया बी कीपिंग करते हैं, बट हु आर नॉट एबल टू अवेल द लोन अंडर दिस स्कीम, ये लोग भी अभी अवेल कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम। तो ये एक बड़ा मीन्स क्या व्हाट आई विल से बजट अनाउंसमेंट में एक बड़ा अनाउंसमेंट है फॉर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, टू इसको स्टैंड अप इंडिया को और भी मासेस में पहुंचने के लिए। और आई थिंक यही है फ्रॉम स्टैंड अप इंडिया स्कीम के जो है, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन आई कैन शेयर। Madam, can I have a question, please? What about the freshers, ma'am? You said. I am not able to hear anything, it's echoing. मुरलीधर जी, आपका वॉइस इको हो रहा। Ma'am, there is only one query which I would request you to address it. Somebody Yes, has tell said already I have taken under Stand Up India scheme 20 lakh. May I expand to loan to 1 crore for expansion of my business? एक मिनट up to I have taken Stand Up India scheme. सर अभी ये जो है दिस इज अभी तक जो स्कीम है ना सर, दिस इज ओनली फॉर स्टार्टअप के लिए जो होगा उसके लिए, तो एक्सपेंशन के लिए वो अवेलेबल नहीं है एज ऑन डेट। मतलब अगर फर्स्ट टाइम जो 1 CR का लोन इन्होंने एक बार ले लिया है, तो उसके बाद मतलब हाँ, इनका जो मुझे समझ में आया कि आउट ऑफ 1 CR 20 lakhs has been taken, the remaining 80 lakhs ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते? अगर एक बार में सैंक्शन हुआ है देन वो ले सकते हैं। अगर एक लोन में अगर मान लो उसका प्रोजेक्ट जो था उसके अंदर पे आपने 1 करोड़ का सैंक्शन करवा लिया बैंकर ने, और उसमें से सिर्फ 20 lakhs का डिसबर्समेंट किया, बाकी लाख का डिसबर्समेंट करना बाकी है, देन इट कैन बी डिसबर्स। बट अगर मान लो सिर्फ 20 lakhs का उसने सैंक्शन लिया और 20 lakhs के ऊपर में उसने 80 lakhs और लेना चाहते हैं as a new loan, then वो अवेल नहीं कर पाएंगे अंडर दिस स्कीम। Okay, thank you, ma'am. I don't think there are any other queries, so I would thank once again on behalf of Dicky and all the Thank you. participants. Thank you, ma'am. Thank you. Taking the program ahead, as you know that in every series we present a success story of Dicky. But before we present the success story, may I request our founder chairman Padma Shri Milind Kamble sir to kindly share a few words and bless us. I think he has joined just now. Chairman sir, can you hear me, sir? Can you hear me? Yes, sir, you're audible. A bit low. The voice is bit low, but you're audible, sir. Okay. So, अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ है वेट ऑन व्हील, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यू इनिशिएटिव है एज पर एज द एनिमल हस्बेंड्री इज कंसर्न और वेटरनरी। सब जानते हैं कि अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, और उसके बाद में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 मई से लेके 13 मई से लेके 17 मई तक 5 दिन उन्होंने अलग अलग सेक्टर में क्या क्या आत्मनिर्भर भारत पैकेज को सपोर्ट किया है इसके बारे में कहा। तो देखिए, मैंने एक मेरा प्रेजेंटेशन किया था आत्मनिर्भर भारत का, तो उसमें जो फोकस वेटरनरी
जो एनिमल डिसीज कंट्रोल, दूसरा ये जो वेटरनरी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट, ये बहुत सारी चीजें और बहुत बड़ा अलोकेशन इस सेक्टर में किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज इस सेक्टर से एक वेट ऑन व्हील इस नाम से जो स्टार्टअप, और बहुत ही अच्छा स्टार्टअप वह ग्रो कर रहा है हैदराबाद एंड अराउंड, तो उनका एक जो बिजनेस मॉडल है उसका प्रेजेंटेशन जो हुआ है, मैं अपील करूंगा कि डिक्की के सभी जो चैप्टर हेड्स है उन्होंने इसको देखा है। तो ये बिल्कुल तालुका लेवल से लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोई इस प्रकार का बिजनेस करना चाह रहा है उसके लिए दिस विल बी हेल्पफुल। दूसरा, अभी जो हमने स्टैंड अप इंडिया में कुछ बदलाव किए हैं, जो आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बजट में जो स्टैंड अप इंडिया का जो मार्जिन है 25% से घटाकर 15% किया है। तो बिल्कुल इसका लाभ सब लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं और भी आई विल अपील टू वेट ऑन व्हील टीम, so devise a ambulance type of a vehicle wherein the all veterinary facility will be available, because जो हमारे देश में जो कैटल का पॉपुलेशन है, गाय भैंस बैल ये जो हैं, ये सब शिप्स और ये इनका लगभग 65 करोड़ पॉपुलेशन है। और गाय और बैल और भैंस एक फार्मर के लिए इतना अहम होता है कि उसके लाइवलीहुड के लिए और उसके लिए, और बहुत बार ये हो जाता है कि ये जो एनिमल्स है ये कुछ खा जाते हैं, तो उसमें कीला वगैरह भी वो जाता है उनके पेट में, तो कहीं घुस जाता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो उसको डिसेक्शन यानी कि उसका कुछ स्कैनिंग नहीं होता है, स्क्रीनिंग नहीं होता है, तो फिर एनिमल की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो गाय भैंस जो है जो दूध देने वाले हैं उनकी फर्टिलिटी भी जो है वो मेजर नहीं होती है। तो ये सब ऐसे उसमें जोड़ के एक और इसको जोड़ के एक जैसे पेट जो है उसके लिए ये बना हुआ है। तो वैसे भी जो हमारे गांव दूर दरार पर जो फार्मर्स है और जो फार्म सेक्टर पर जो कुछ नए स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इसका बहुत लाभ होगा, ऐसे मुझे लगता है। और इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए वेट ऑन व्हील टीम ने, ऐसे मैं उनको अपील करूंगा। और ऐसे भी अगर मॉडल वो आता है जस्ट एम्बुलेंस टाइप का, जाके गांव में सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, एनिमल्स का चेकिंग हो रहा है, उसका एक्सरे हो रहा है, उसका स्कैनिंग हो रहा है, उसका वैक्सीनेशन हो रहा है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा अनटैप मार्केट जो है ये है, और इसमें स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। बस इतना ही मैं कहूंगा। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सलेंट है। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच गौतम, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. And please keep us blessing the way you are doing and guiding us, sir. With your permission, I shall take the program ahead. In today's success story, we have Miss Aarti Singh from Puspa Enterprises. She is an example of a woman entrepreneur, a strong woman entrepreneur. She has broken all the myths and she is into the transportation business. जबकि हम लोग को ये पता है कि ट्रांसपोर्टेशन इज डिफाइंड, जो हमारा एक मिथ है, ट्रांसपोर्टेशन इज डिफाइंड टू अ सर्टेन क्लास और सेक्टर ऑफ पीपल, बट उस मिथ को ब्रेक करके मिसेस आरती सिंह हैज come a long way into transportation of petrochemical products.
May I now request Ms. Aarti Singh to kindly share her success story with us. Thank you. Good evening, Kamlesh sir. Good evening, Nara sir, and good evening, everyone. I am Aarti Singh from Lucknow, and आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी जो जैसा कि अपनी सक्सेस स्टोरी। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने एमबीए किया हुआ है एचआर में, और मैं डाबर के साथ भी मैंने वर्क किया हुआ है। बट डिक्की ने मुझे प्रोवाइड की अपॉर्चुनिटी टू make full advantage of my MBA. And now I am a proprietor of Pushpa Enterprises and doing my business with IOCL in the field of LPG transportation. Dicky made it possible by landing a project like this, and moreover, hand holding in providing loan under Stand Up India. So thank you so much, Dicky. And now it's been approximate 2 years, and my business is running smoothly. सो मुझे हर तरह का हेल्प मिला डिक्की से। और मुझे शशांक सर मिले थे आज से 3 साल पहले। उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सब बताया था और काफी हेल्प की उन्होंने डिक्की के थ्रू मेरी। एंड सो वंस अगेन आई like to thanks Dicky and especially Milind Kamble sir to make it so easy and possible for me to be in this business. Thank you so much. कौन से बैंक से लोन लिया मैम आपने? सर मैंने बीओबी से लोन लिया था। 90%, 75%? सॉरी सर? 90%, 75%? सर हाँ, it was 75%. Okay, okay. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you for such an inspiration story. And I, on behalf of Dicky, wish you all the best for this, not only for this project, but any other project that you're going to take during Thank your career. We wish you all the best. May I now request Manoj sir to kindly give the vote of thanks. If anybody has any other queries, you can take them once again, Gautam. Okay, sir. At the end, also just take any queries, be it from the franchisor or from SIDBI. एक बार end में भी ले लो वापस से. I request all the participants कि आप लोगों का अगर कोई query है किसी किस्म का भी. Hello. I have one query with Dr. Murli. Yeah. Dr. Murli, I mean, all this franchisee model and everything is there, fine. But practically, when these guys don't have that veterinary knowledge, I'm sure you will give that support. But I don't know, practically, you think it's workable? Even somebody coming from a varied background or say from humanities or commerce, and छोटा मोटा कुछ issue है, so will you give that technical support to the franchise? Sir, you are on mute, sir. Mulida sir, I think you should unmute. Yeah, corporate office, can you please help Dr. Murlidhar unmute? Yes, sir. Yes, sir. Please speak now, sir. Dr. Murlidhar. Yeah.
Can't hear anything. Sir, आपका आवाज आ नहीं रहा है. There's a problem with your mic. Anyways, anyone else has any queries, you can ask. At least he will listen to us and he can get back to us. We can tell you through corporate office, we can answer your queries. If corporate office can note down who is giving the query, we can take it from Dr. Murli and later, address their queries. Chairman sir, you wanted to say something? वो मुरली जी, डॉक्टर मुरली जी का वॉइस नहीं आ रहा है, तो बस उनके लिए मेरा एक क्यूरी था कि जो उन्होंने पेट के लिए बनाया है और जो मैंने अभी सजेशन दिया है, लास्ट भी उनको दिया था, ही इज अ केटरिंग फॉर 5 करोड़ पॉपुलेशन, डॉग्स एंड पेट्स जो भी है, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है उसके लिए भी एक अच्छा एम्बुलेंस टाइप का या इस टाइप का मॉडल हो सकता है. तो बस वही मुझे उनको पूछना था, मगर हिज वॉइस इज breaking. One tribal entrepreneur in Rajasthan, Manish Meena, is doing it. He has this thing called Animal ICU. I'll just share with everybody the link. I've shared it in the chat box. जो आप बोल रहे थे, he's doing exactly that. It's a startup, and he's being incubated right now in I am Kashipur. But again, India has the largest cattle population in the world, I think. तो बहुत जरूरत है और बहुत स्कोप है इस फील्ड में काम करने के लिए. सर, हमारा जो पॉपुलेशन है कैटल का, अमेरिका का जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे डबल है. अमेरिका का 35 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल लोगों का, मगर हमारा एनिमल का पॉपुलेशन उनसे डबल पॉपुलेशन है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप जो मुझे आई वांट टू पॉइंट आउट. एंड यस संजीव, यू टोल्ड कि दिस इज अ वेरी गुड एनिमल आईसीयू. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टअप. और इस प्रकार के अगर और भी कोई लोग अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसको भी स्टैंड अप इंडिया से सपोर्ट मिलेगा. बस इतना ही मुझे ऐड करना था. मुरली इज आउट ऑफ वॉइस और कुछ तो भी कनेक्शन आउट ऑफ कनेक्शन. आई एम ओवर. If I can supplement, Sanjeev Shankar here. Yeah, please. Yeah. See, thank you, Dr. Muralidhar. It was an excellent presentation. The amount of the proteins and the animal feed, if you look at it the last 2 years, 3 years, the volume of business which is increasing, especially with the animal feed, especially with the dogs and cats are growing around, it's like 60 to 70% year on year. And this trend has been predominantly witnessed in places like Delhi, where Sanjay would obviously supplement, like each and every pocket, they have people to come and take the dogs for walk. Even today, that has become a huge business in places like Delhi, where the dog walking is done by the people who come and who handle the grooming. And this is, I think, Manoj, if you could take it to Delhi and the North India, this has got a huge potential. And similar is the case with Rajasthan also. So this is a trend which is growing. And the second area where the huge opportunity where I undersee is places like where the expat population is more, whether it is Mysore, whether it is Pune, where there is a huge German population. So that is where these the affordability in these areas are very high. So perhaps that is one area where we could look at where the demand and where the affordability, because one is keeping a dog has become a sort of a fashion statement, like countries like Korea, where people are predominantly friends of the dogs rather than the friends of people. So such is a culture which is developing, especially in the expat community today. So that especially places like Delhi, Gurgaon, that similarly with Pune, Bangalore, and these metros where there is a huge expat settlement.
And perhaps we could reach out to our membership in those areas and look at this as a huge business model, because the affordability level is very high in these areas. So that break even, you're talking about a break even after 6 to 9 months. Perhaps this could even be faster in these areas. Yes, sir, I think I am audible, sir, now. Yes, yes, you're audible now. Yes, yes, doctor. Sir, Chairman, sir, namaskar, sir. Namaskar. Thank you very much for your kind words and the encouragement you are giving constantly. Whenever we meet, you are telling about this huge population of the large animals and the sheep and goat. So since last time also you told me the same thing. So definitely we'll look into that, sir, because so far I have not concentrated on the large animal side. Since Telangana government, they are having the mobile veterinary clinics by the government itself. So here, the one of the GVK group, they are running this activity. The government is hiring the vehicles from them. There as the service providers. They are giving each vehicle 2.7 lakhs per month per vehicle for 120 vehicles, something like that. So all over Telangana is running now, as of today. And very soon, the Andhra government also, they are also floating the tender. I think that is the only GVK people we cannot go in competition with them because they are a big group. So that is the one thing, sir. Otherwise, we can also do the same thing, sir. Because the way I have connects all over India, all the veterinary doctors, getting a doctors onto the roles is not a big problem. And having this experience in the running of these mobile clinics, I am the first person to start the mobile clinic in Hyderabad. And later on, all these people came. Recently, the director of animal husbandry, Andhra, he has visited my hospital and seen the WOW vehicle and how it's operating. Even they are also looking for to make a beginning of the services for even for pets also, along with the large animals. Recently, he has visited my hospital. He has seen the facility here, sir. And definitely, as he told, sir, the very huge potential is there. But so far, I have not given concentration on the large animal now. After your suggestions, sir, definitely I'll look into that. I'll start making out of it, sir. Definitely, I do that. And coming to the Janakiran, sir, as you told, you are rightly said, sir. Definitely, the practice of the pet practice is more affordable in the metro cities, like all the state headquarters, like 24 headquarters, and all the type 1, type 2 cities. And even nowadays, as the nuclear families are increasing, type 3 cities also now the pet population is increasing. So definitely the demand will be more. So we can affordability is more, sir. So people who here take this as a franchisee, they can make money. As sir told, I have taken the numbers and the ticket value, least of the release size. That's the reason it's coming to so late. Otherwise, that we can make it ourselves. And coming to Sanjeev sir, good evening, sir. As you told, this is rightly mentioned. This treatment sir, this is a totally professional job. Whoever comes takes this as a franchisee. And if at all we hire a doctor and give to them also, the operational challenges will be definitely there. Because there is the conflict between the doctor and the franchisee owner. Doctors has the ego, definitely they have the ego feeling I'm a doctor. And as a franchisee, they have the, I'm the owner of the franchisee. You should listen what I say. So this operation will be some definitely this is a challenge. And we will definitely be help them, sir, in my background. We will be in the loop of the operations. Definitely, Dr. Dag and WOW team will be in the loop of operations. We will be coordinating for all these conflicts. We'll try to keep the maximum risk for the franchisee owner. We try to operate and we can plan something which is workable both the franchisee owner and the WOW team and the doctor. So definitely we can help them. So the total operations we can regulate on our norms, sir. And we help the franchisee owner. Sir, my question was, suppose somebody is using the slow services or whatever, somebody is just taking the washing and shampooing and this thing, and the person realizes that the pet has some infection or something. So will there be a possibility of them referring them to you, or suppose in some other city, will there be some tie-ups with some veterinary doctors where they can recommend them, they can go, something like that?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, we can do because whichever city we are operating, whichever city the franchise is being given, definitely we'll identify one or two hospitals where we can refer to the cases which is surgery required. See, once we take up the any case of any our client, once they call for the war vehicle to their home, he becomes our client. We want to give the end-to-end solution. We cannot say that this service is not with us and this we can't do, this we can't do, because that we lose the trust of the client. That we don't want to do. Before that only, if at all we are giving any franchise in any city, before that we'll have a tie-up with one of the biggest leading hospital in a particular city, and definitely they'll be having the diagnostic facilities also. So we'll be having tie-up with them. What are the cases they referred by the veteran bills? We have to honor that. We'll have the agreement with them, and he will refer the what are the referral charges are there. He has to pay to the referring vehicle. And even here, the one more thing is dog hostel we are not included. Dog hostel is one of the big business people who is going out of station abroad for on vacation or some for marriages. Even people they don't know where they take. If someone has to stay at home, even that also we can refer to some of the dog. We can have the tie-up and we can generate the income for our franchisee owners. Sir. Thank you. Thank you. Shall we take it forward, sir? Yes, yes, please, please. Sir, I take this opportunity and I'm extremely sorry that I could not introduce Janaki Ram Sangar sir in this platform. So, sir has recently joined as Director General of DT. I welcome you on this platform, sir. And now, because we don't have any other question and answers from anybody, any queries, in fact, related to any of the franchising model or city or I have mentioned all Madam, the contact details, corporate contact Madam, details. I am Dr. Muralidhar. I have a question, madam. What about the young entrepreneurs if they're coming out of the college and how to take up the benefits of this Stand Up India, madam? Sir, it is like if they are ready with the profile and hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Yeah, can you? Yeah. Okay. If they are ready with profile and their profile is acceptable to the banker, they can approach. It is like means mainly just Stand Up India. It is for the aspirant only. This is for the aspirant who want to do business. So it is not necessary ki he has just come out from the college or anything. It does, because this is something, and the scheme is for the greenfield enterprises. That greenfield is the first venture entrepreneur. So even the fresh pass out graduates can also avail this loan. There is no restriction, but the thing is ki their project and that should be acceptable by the banker where he is approaching. Which are the banks, ma'am? Which are the banks we can approach? This is scheduled commercial banks. All scheduled commercial banks, they can approach public sector, private sector, and RRBs to all the public sector banks. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Okay. Ma'am, there's one more query from Mr. Rajnikant. His query is, can wife and husband both separately avail benefit of Stand Up India scheme, or is there any restriction for it? See, it is like can husband and wife both separately avail benefits of the stand-up if they are running different enterprises and husband is like he is in means if they can also avail separately, but it should be a new entity. Okay, thank you, ma'am. I hope it should be a Mr. greenfield project. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. I hope Mr. Rajnikant, your query has been properly addressed.
And गौतम सर एक now, एक मेरी क्वेरी है। गौतम सर एक मेरी क्वेरी है। लखनऊ से अनिल आनंद बोल रहा हूँ मैं। जी मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे स्टैंड अप इंडिया में एलपीजी टैंकर में हम लोगों ने 35 लाख का लोन लिया था जो है स्टैंड अप इंडिया के तहत। अब आगे इस बिजनेस को हम और एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, मुझे और फाइनेंस की आवश्यकता है जो है, तो हमें किस उसमें जाना चाहिए, किस स्कीम के तहत जाना चाहिए, किस पे जो है। अब स्टैंड अप इंडिया में जैसे अभी आपने बताया कि जब एक बार हमने एविल कर लिया तो उसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते उससे ज्यादा जो है, लेकिन अब हमें और लोन की आवश्यकता है जो है, तो उस पे हाँ, किसमें जाना चाहिए जो है। इसके लिए आपका जो बैंकर आप डील कर रहे हैं ना, दे विल बी द बेटर पर्सन टू टेल यू बिकॉज दे विल नो अबाउट द प्रोजेक्ट हाउ यू आर परफॉर्मिंग. सो योर current banker is the best person to judge you and give you further loan. ओके मैम। नहीं परफॉर्मेंस तो अब तक जो भी एलपीजी टैंकर के हम लोगों ने फाइनेंस कराया था उस बैंक से जो है, हमारी किस्तें बराबर जा रही हैं। अब तक कभी भी एनपीए नहीं हुआ हमारा हाँ वही अकाउंट वगैरह जो है, तो इसलिए परफॉर्मेंस तो बोल रहे हैं ठीक कि है। बिकॉज इफ हाँ, तो जो भी आपका परफॉर्मेंस के बेसिस के पे वो बैंकर ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आपका बेस जो भी वहाँ पे भी बैंक के ऊपर या लॉट्स ऑफ स्कीम अदर स्कीम बैंक्स का अलग अलग स्कीम होता है जो एक्सपेंशन के लिए देता है, ग्रोथ करने के लिए। तो वो जो भी बैंकर से आप डिस्कस कर लीजिए, दे विल गाइड यू बेटर इन दैट। ओके थैंक यू मैम। देखिए, अभी थैंक यू तक सर। आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी बैंक में। स्टैंड अप के माध्यम से आपको पहली बार बिजनेस करने के लिए लोन मिला। अब आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है। जैसा आप कह रहे हैं कि आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, अच्छा है। तो बैंक्स में तो बैंक लोन तो देता ही था। ये तो चूंकि SC ST वालों को फर्स्ट टाइमर्स थे और उनको कोलैटरल देने के लिए नहीं था, इसके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। एक बार आप ले चुके हैं, अगर आपके बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अब बन गई है और अच्छी है, तो बैंक खुशी खुशी आपको आगे लोन देगा किसी भी दूसरी स्कीम में। ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे thank you Anand. Thank you Anamika ma'am for addressing all the queries. Now may I request Sanjeev Dangi sir ji, who is the national vice president, to kindly give the vote of thanks. सर सवाल पूछना था। थैंक यू। किसी को सवाल अगर अभी भी पूछने हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो फिर सवाल आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सवाल एनीवे आप पूछिए, बट इसके बाद अगर किसी का सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, थोड़ा हमें भी इजी रहता है आगे ले जाने के लिए। पूछिए। सर स्टैंड अप इंडिया के बारे में जी राज जी बोलिए। स्टैंड अप पूछिए, बोले ना। राज जी आपका वॉइस कट रहा है, कुछ क्लियर नहीं आ रहा। एक सर इट इज बेटर आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा सर। ओके सर, थैंक यू सर। Dangi sir, may I now request you to kindly. Till then, first of all, thank you all of you for joining this program, Swavalamban Sankalp, which is a joint program being conducted by SIDBI and Dicky. And SIDBI and Dicky do not have any. I just want to clarify to all the people who are coming here. It is generally clarified every time, but again, see, we don't have any commercial interest in the franchisers or the franchisee. SIDBI or Dicky का खाली ध्येय ये है, the only motive behind conducting these programs is to bring new business ideas to you. So whatever you do with the franchisers, I'm not talking about today's franchiser, but in general, we should all do your commercial due diligence, because Dicky and SIDBI's role is only to form a bridge between two of you. We do not have any other commercial interest as such. वो आपका पूरा ड्यू डिलिजेंस कीजिए। डेफिनेटली हमने कुछ ड्यू डिलिजेंस किया है, इसीलिए ये लोग या जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है या जो अच्छे कमर्शियलाइजेशन हो सकते हैं, उनको वी आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड। यू शुड ऑल्सो डू, आपको आपका ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए।
बट ऑफ कोर्स अगर आपको उसके लिए डिक्की की मदद चाहिए कभी भी, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट एनी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर या एनी चैप्टर जिस भी स्टेट में आप हैं. At the end, I would like to thank our honorable chairperson, Dr. Milind Kambleji, who took out a lot of time today. Our national president, Padma Shri Naraji, our women wing mentor, Seema Kambleji, our vice president, Dr. Raja Nayak ji, Mr. Manoj Kumar, North India President, for conducting this program, and also Gautam Vishwakarma ji, Delhi Chapter Vice President, who has been a very good host of the program, all the chapter heads, and all the members who have joined us today. And of course, the stakeholder and partner for this event, SIDBI, and Anamika Madam and Mamta Madam, and और भी जो हैं SIDBI से, it really gives a lot of confidence to people when somebody from SIDBI or bank are there to answer their queries. It is just the genetic or the mental makeup. तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है जो नया फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, बिजनेस लेना चाहता है. So, and you have really answered all their queries very well. So thank you very much for that. And I thank our DG Shankarji and Delhi Corporate Office for conducting this program very well. Thank you very much. And in case I don't think वो chat box में अभी तक message आया है, so we'll end this program here. But anybody has any queries even after the program, they can contact the Delhi Corporate Office or your local chapter, and we'll definitely get back to you on the queries. Thank you. Before closing the day, sir, we had the question in the chat box of Mr. Raj Yadav, and the question was again the repetitive one, whether husband and wife can have separate loans, under the Stand Up India scheme. So I've cleared it that it should be a separate entity. If you want to avail under the Stand Up India scheme, then both the husband as well as the wife can get the bank loan under Stand Up India scheme. Okay, thank you very much, sir, and thank you all the participants. We are eagerly waiting to meet next week for the next series, that is the 13th in our series. Thank you very much, sir. Thank you, Gautam ji. Thank you.